Good morning students, welcome to my video lectures. First Brahmanad. Om Shanti Shanti Shanti. In last class we discussed direction ratio, direction cosine of a line segment, also direction cosine of a line, angle between two lines. Okay, today we are going to discuss some application about angle between two lines. Okay, question number 1. Find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the point 1, 1, 1 on the line joining 1, 4, 6 and 5, 4, 4. Question टे बुझे ट्राई करो. This is a one point. Suppose this is a point having coordinate 1, 4, 6 and this is B point having coordinate 5, 4, 4. Okay, this is a point P having coordinate 1, 1, 1. तो P रू ड्रॉ कराई परपेंडिकुलर मीट कल एट M पॉइंट रे. तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M. Find the foot of the perpendicular drawn from the point P on the line joining A and B. Okay, on the line joining A and B. This is P point having coordinate 1, 1, 1 and A coordinate 1, 4, 6, B coordinate 5, 4, 4. Let M is the foot of the perpendicular drawn from the point P on the line joining A and B. Okay, let solution. Let M is the foot of the perpendicular drawn from the point P on the line joining on the line P bracket re 1, 1, 1 on the line joining A bracket re 1, 4, 6 and B bracket re 5, 4, 4. Okay, let M divide the line segment joining the ratio. Let M divide the line segment joining A and B in the ratio lambda is to 1 internally. Lambda is to 1 internally means M divide करुची A B को lambda is to 1 रे internally. M divide करुची A B को lambda is to 1 internally. So what is the coordinate of M? Now coordinate of M, therefore coordinate of M is equal to coordinate of M is equal to lambda into coordinate of B plus 1 into lambda into this plus 1 into this 1 into coordinate of A whole divided by lambda plus 1, that is equal to 5 lambda plus 1 divided by lambda plus 1, 5 lambda plus 1 into 1. Okay, comma 4 lambda plus 4 lambda into 4 plus 1 into 4 divided by lambda plus 1, comma lambda into 4 lambda plus 1 into 6 divided by lambda plus 1. This is the coordinate of M. Next to find the DRS of PM. तो ये ला M कितना सिला M is equal to 5 lambda plus 1 by lambda plus 1. Next 4 lambda plus 4 by lambda plus 1
नेक्स्ट 4 लैम्बडा प्लस 6 बाई लैम्बडा प्लस 1 ये कोऑर्डिनेट ऑफ है। तो DRS ऑफ PM कहीं PM क्या को परपेंडिकुलर AB को जो PM जो परपेंडिकुलर AB तो DRS ऑफ PM इंटू DRS ऑफ AB इज इक्वल टू 0 मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर देन सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स नहीं कि मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 प्रोडक्ट ऑफ देयर DRS सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द DRS इज इक्वल टू 0 ओके। तो DRS ऑफ PM इज इक्वल टू व्हाट M रु P माइनस करिबा 5 लैम्बडा प्लस 1 बाई लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 4 लैम्बडा प्लस 4 बाई लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 नेक्स्ट 4 लैम्बडा प्लस 6 बाई लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 ये DRS ऑफ PM और जो सिंप्लीफाई करिबा तो 5 लैम्बडा माइनस लैम्बडा मीन्स 4 लैम्बडा बाई लैम्बडा प्लस 1 नेक्स्ट 3 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3 बाई लैम्बडा प्लस 1 नेक्स्ट 3 लैम्बडा प्लस 5 बाई लैम्बडा प्लस 1 दिस इज DRS ऑफ PM okay next to find DRS of AB okay DRS of AB DRS means direction ratio of AB तो B पॉइंट रू A पॉइंट माइनस करो 5 4 4 माइनस 1 4 6 मीन्स 5 माइनस 1 4 4 माइनस 4 0 4 minus 6 minus 2 this is DRS of AB since AB perpendicular to PM therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0 by condition of perpendicularity perpendicularity okay। तो दिस इज A1 B1 C1 दिस इज A1 B1 C1 दिस इज A1 B1 C1 ओके A1 B1 C1 एंड दिस इज A2 B2 C2 ओके ये A1 B1 C1 दिस इज A2 B2 C2 तो दिस इम्प्लाइज 4 लैम्बडा डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 3 डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 लैम्बडा प्लस 5 डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ओके इज इक्वल टू व्हाट 0 इज इक्वल टू तो इम्प्लाइज 16 लैम्बडा बाई लैम्बडा प्लस 1 दिस इज 0 0 समथिंग इक्वल 0 माइनस 6 लैम्बडा माइनस 10 डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 16 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा माइनस 10 डिवाइड बाई लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10 लैम्बडा माइनस 10 इज इक्वल टू 0 implies 10 lambda is equal to 10 implies lambda is equal to 1 so lambda is equal to 1 means put the value of lambda we get the coordinate of M okay put the value of lambda we get the coordinate of M so M is equal to what 5 lambda plus 1 divided by lambda plus 1 4 lambda plus 4 divided by lambda plus 1 4 lambda plus 6 divided by lambda plus 1 तो M is equal to put lambda is equal to 1 तो 6 by 2 this is 8 by 2 this is 10 by 2 so is equal to 3 4 5 3 4 5 this is the coordinate of M
Okay. Next question. If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosine of two mutually perpendicular lines, okay, prove that the direction cosine of a straight line perpendicular to both of them, means third line also perpendicular to both the given lines, are M1 N2 minus N1 M2, N1 L2, minus L1 N2, L1 M2 minus M1 L2. Okay. Suppose this is first line, this is the second line, and this is the third line. This is L3, this is L2, and this one L1. So they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. DCS of L1 कहले L1 M1 N1. DCS of L2 capital L2 कहले L2 M2 N2. And DCS of L3 suppose LMN. So we need to show that L is equal to M1 N2 minus N1 M2, M is equal to N1 L2 minus L1 N2, and N is equal to L1 M2 minus M1 L2. Okay. Proof. Second one, let the DCS of capital L1 is L1 M1 N1. Okay. Given that L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DCS of two mutually perpendicular lines. Okay, perpendicular lines. Therefore, by condition of perpendicularity, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. This is equation 1. Okay. Let L, M, N be the DCS of third line, which is also perpendicular to both the given lines, that is capital L1 and capital L2. Okay, capital L1 and capital L2. Hence by condition of perpendicularity, means L1 perpendicular to L3, nahi ki? So this implies L1 plus M1 plus N1 is equal to 0. This is equation 2. And L2 plus M2 plus N2 is equal to 0. Equation 3. Also L2 perpendicular to L3. L2 perpendicular to L3. Ethi L1 perpendicular to L2. मन रखे जिनसे आएगा. Okay. L2 perpendicular to L3. Okay. So from equation 2 and 3. Achha, we need to show that L is equal to M1 N2 minus N1 M2, M is equal to N1 L2 minus L1 N2, okay, and N is equal to L1 M2 minus M1 L2. From equation 2 and 3, by cross multiplication method, L देखो L डाला कॉमन, इट M डा कॉमन, इट N डा कॉमन, तो L डिवाइडेड बाई
L divided by m1 n2 minus n1 m2. L divided by m1 n2 minus n1 m2. Okay. L divided by देखो ठीक है L divided by m1 n2 minus n1 m2 is equal to m divided by n1 l2 minus l1 n2 is equal to n divided by l1 m2 minus m1 l2. Okay. This is m divided by n1 l2 minus l1 n2 is equal to n divided by l1 m2 minus m1 l2. Okay. जेहेतु सिंस एलिमेंट आर डीसीएस तो डीसीएस को जो मैंने प्रोपोर्शनल करते हैं से कौन डीआरएस नहीं कि अच्छा सिंस LMN आर डीसीएस देयरफॉर m1 n2 minus n1 m2 n1 l2 minus l1 n2 l1 m2 minus m1 l2 are DRS because m1 n2 minus n1 m2, n1 l2 minus l1 n2, l1 m2 and minus m1 l2 are proportional to duration quotient of the line L3, that is LMN. So hence they are DRS. But we need to show that m1 n2 minus n1 m2, n1 l2 minus l1 n2, l1 m2 minus m1 l2 are DCS of L3. DCS of L3. That is m1 n2 minus n1 m2 whole square plus n1 l2 minus l1 n2 whole square plus l1 m2 minus m1 l2 whole square is equal to 1. एटा हमें प्रूव करिबा. ओके. तो फर्स्ट LHS पार्ट. ओके. तो LHS पार्ट. LHS what m1 n2 minus n1 m2 whole square plus n1 l2 minus l1 m2 whole square plus l1 m2 minus m1 l2 whole square. ये LHS. तो फास्ट मैंने ओपन कर दिया सब जगह होल स्क्वायर को ओपन कर दिया. तो दिस इज m1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 n1 n2 प्लस n1 स्क्वायर l2 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2n1 n2 l1 l2 प्लस l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर l2 स्क्वायर माइनस 2 l1 l2 m1 m2. ओके. 2 l1 l2 m1 तो टिके सिंप्लीफाई कर देखो. तो l1 स्क्वायर इंटू l1 स्क्वायर देखो कोड अच्छे l1 स्क्वायर एठी अच्छे l1 स्क्वायर आउ एठी अच्छी l1 स्क्वायर. तो l1 स्क्वायर कॉमन काट देले कौन आसीबो. दिस इज n2 स्क्वायर नॉट m2 n2 स्क्वायर. तो l1 स्क्वायर कॉमन काट देले कौन लखड़ी एठी अच्छे l1 स्क्वायर एठी l1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस कौन हैला n2 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर. तो गोटे काम कर l2 स्क्वायर ऐड करो l2 स्क्वायर माइनस करो. ओके. सिमिलरली m1 स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर कॉमन काट देखो ये अच्छे m1 स्क्वायर ये अच्छे m1 स्क्वायर. तो m1 स्क्वायर कॉमन काट देले l2 स्क्वायर प्लस कौन है n2 स्क्वायर ये गोटे m2 स्क्वायर ऐड करो अगेन m2 स्क्वायर माइनस करो प्लस n1 स्क्वायर इंटू ये अच्छे n1 स्क्वायर अगेन ये अच्छे n1 स्क्वायर कॉमन काट देले l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर है l2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर. तो ये भी n2 स्क्वायर ऐड करो n2 स्क्वायर माइनस करो माइनस जहाँ चाहो 2 एक्स्ट्रा 2 इंटू l1 l2 m1 m2 माइनस 2 इंटू m1 m2 n1 n2 माइनस 2 इंटू n1 n2 l1 l2. ओके. अच्छा. सिंस l1 m1 n1 आर द DCS ऑफ फर्स्ट लाइन तो l1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर इक्वल 0 एंड l2 m2 n2 आर द DCS ऑफ सेकंड लाइन. तो
तो L2 square plus M2 square plus N2 square also 0. Okay. तो L1 square into this is 1. तो 1 minus L2 square plus M1 square into this is 1. तो 1 minus M2 square plus N1 square into this is 1. तो 1 minus N2 square minus और रेस्ट पार्ट जहाँ अच्छी रेस्ट पार्ट कौन अच्छी 2L1 L2 2L1 L2 M1 M2 ओके minus 2 M1 M2 N1 N2 minus 2 N1 N2 L1 L2 सारे लिख दो जी L2 square plus M2 square plus N2 square is equal to 1. तो is equal to तो मल्टीप्लाई करो L1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो L1 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 M1 M2 माइनस 2 M1 M2 N1 N2 माइनस 2 N1 N2 L1 L2 ओके तो इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर देखो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर माइनस देखो ये अच्छी माइनस ये अच्छी माइनस ये अच्छी माइनस सब जगह माइनस अच्छे तो माइनस टी कमन काटिदेले तो यहाँ L1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 M2 होल स्क्वायर प्लस N1 N2 होल स्क्वायर प्लस 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 2 into L1 L2 M1 M2 plus 2 into M1 M2 N1 N2 plus 2 into N1 N2 L1 L2 okay so this is 1 L1 square plus M1 square plus N1 square is 1 minus this is A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA that means A plus B plus C whole square. So this is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 whole square is equal to 1 minus 0 from equation 1 okay also L1 square plus M1 square plus N1 square is equal to 1 तो is equal to कौन पाइला हमें 1 hence तो आम कौन दरकार थिला ना आम दरकार थिला M1 N2 माइनस N1 M2 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर जो 1 दरकार थिला तो 1 आसीगला देयरफॉर और हेंस M1 N2 माइनस N1 M2 कॉमा N1 L2 माइनस L1 N2 कॉमा L1 M2 माइनस M1 L2 आर DCS of third line okay hence proved ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन टा बुक रो 7 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है बुक रो 7 ना 8 देखि चेक कर दबो बोधे बुक रो 8 नंबर क्वेश्चन बोलते है चेक कर दबो नेक्स्ट क्वेश्चन ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा with 4 main diagonals of a cube then prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4 by 3 and sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is equal to 8 by 3 ओके तो फास्ट आम कौन ना क्यूब ना गोटे देख क्यूब ना नहीं तो दिस इज ए क्यूब देख टी क्यूब कर this is a cube. Cube means all sides are equal in length. Okay. So this is x axis nature. This is y axis and this is z axis. This is origin nature. This is A, B, C, D, E, F. This is kona G. Okay. So let
A, B, C, D, E, F, G is a cube. Okay, let the length of each edge of a cube is small a. Means a length भी है, because all the sides are equal length, so length of each edge of a cube is gonna small a. Okay, so since a lies in x axis, a length रहे ना, since a lies in x axis, coordinate of a is a 0 0 and b lies on xy plane, तो x रहबो y रहबो z coordinate 0 हबो, तो b रो coordinate a 0. C lies on y axis, तो x coordinate 0, z coordinate 0, therefore this is 0 a 0. D lies on yz plane, तो y रहबो z रहबो extra 0 हबो 0 a. E lies on z axis, तो x coordinate 0, y coordinate 0, z coordinate is a because this length is a. F lies on xz plane, तो x coordinate is a, y coordinate 0 because xz ऊपर y xz plane ऊपर y coordinate 0 and z coordinate is a. And G lies on space, तो आर सब जगह रहबो a. ओके, जेहेतु G लाइस ऑन स्पेस रहुची तो 0 कोऑर्डिनेट a. ओरिजिन टा कौन ना 0 0 0. ओरिजिन टा कौन 0 0. लेट ओ विद द ओरिजिन. ओके, लेट ओ ए सॉरी ओ ए बी सी डी एफ जी एच इज ए क्यूब विथ ओ एज ओरिजिन. ओटा कौन है ओरिजिन विथ ओ एज ओरिजिन. ओके, लेट the length of each edge of cube be small a. Cube is small a. Okay, there are 4 main diagonals of a cube. There are 4 main diagonals of a cube. Diagonals of a cube, and they are OG, ये लोटे मेन डायगोनल क्यूब, कॉमा AD, कॉमा EB, AD, कॉमा EB and CF, C2F. There are 4 main diagonals of a cube. Okay, main diagonals of a cube. Therefore, DRS of OG means G point to O point minus कर कौन आसीबो A. Okay, तो DCS of OG is equal to a divided by square root of a square plus a square plus a square, comma a divided by square root of a square plus a square plus a square, comma a divided by square root of a square plus a square plus a square. That is a by root 3a, comma a by root 3a, comma a by root 3a. That means 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 means DCS is equal to a divided by square root of a square plus b square plus c square. Here b, c both are a, therefore a by 3a square root, that is root 3a. So a को a cancel 1 by root 3. So DCS of OG is 1 by root 3. Similarly, DRS of AD means d रू a minus करो, तो minus a and corresponding DCS of AD is equal to minus 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. Okay, next DRS of EB is equal to b रू e minus करो, तो a minus a and the corresponding DCS of EB is equal to 1 by root 3, 1 by root 3 minus 1 by root 3. Okay, next one CF, DRS of CF is equal to F रू C point minus करो, F रू C minus करो, A minus 0,
ए कॉमा माइनस ए कॉमा ए। तो करस्पॉन्डिंग DCS ऑफ CF इज इक्वल टू 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। ओके। तो सब जाक कौन आसला आमर जिते सब कोऑर्डिनेट मीन्स डायगोनल थिला क्यूब रो चार्टा डायगोनल रो DCS आसीगला। ओके। अच्छा लेट थीटा बी द एंगल मेड सॉरी let the line capital L makes alpha comma beta comma gamma and delta angle with 4 main diagonals of a cube with 4 main diagonals of a cube, that is OG, AD, EB and CF respectively. Therefore respectively, and let L, M, N be the DCS of the line L, line capital L. Therefore cos alpha is equal to what? L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. तो ये L1 M1 N1, ये L2 M2 N2. ओके। cos alpha means कौन आसीबो DCS of OG and DCS of line L is equal to L/√3 plus M/√3 plus N/√3. That means L plus M plus N/√3. Cos beta is equal to cos beta minus L plus M plus N/√3. Cos beta is equal to minus L plus M plus N/√3. Cos gamma is equal to cos gamma means एंगल बिटवीन EB एंड L ना कि। तो ठीक अच्छे L प्लस M माइनस N/√3 L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 प्लस N इंटू माइनस 1/√3 इज इक्वल टू L प्लस M माइनस N/√3 एंड cos delta is equal to angle between CF and the line L. तो L माइनस M प्लस N/√3 L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू माइनस 1/√3 प्लस N इंटू 1/√3 दैट इज L माइनस M प्लस N/√3। ओके। तो LHS पार्ट LHS कौन अच्छी ना cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा। तो cos अल्फा मीन्स L प्लस M प्लस N/√3 होल स्क्वायर प्लस cos बीटा L प्लस माइनस L प्लस M प्लस N/√3 स्क्वायर प्लस cos डेल्टा cos गामा मीन्स L प्लस M माइनस N/√3 होल स्क्वायर प्लस cos डेल्टा कहले L माइनस M प्लस N/√3 होल स्क्वायर। तो इज इक्वल टू खोलसा खोल दबा। तो 1/3 देखो 1/3 कॉमन आसीगला। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN। तो फर्स्ट वन इज ओवर। सेकेंड वन माइनस L स्क्वायर अर्थ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस 2LM प्लस 2MN कहीं M पॉजिटिव N पॉजिटिव माइनस 2LN ये रखद L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर माइनस 2LM प्लस 2MN माइनस 2LN प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2LM माइनस 2MN माइनस 2LN। ओके। तो इज इक्वल टू 1/3
प्लस 2lm को माइनस 2lm कैंसिल, प्लस 2mn को माइनस 2mn कैंसिल, प्लस 12n को माइनस 12n कैंसिल। ओके, नेक्स्ट प्लस 2lm को माइनस 2lm सॉरी डाला 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln डाला 2 माइनस 2lm, तो प्लस 2lm को माइनस 2lm कैंसिल, प्लस 2mn को माइनस 2mn कैंसिल, नेक्स्ट 2ln को 2ln कैंसिल, प्लस 2ln को माइनस 2ln कैंसिल, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 और रहेगा 4 5 6 अच्छा प्लस 2lm सॉरी 6टा टर्म 1 2 3 4 5 6 ओके। तो 2lm माइनस 2lm कैंसिल, 2mn माइनस 2mn कैंसिल, 2ln माइनस 2ln कैंसिल, नेक्स्ट प्लस 2lm और अच्छी अनदर वन प्लस आल्सो आर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2lm माइनस 2mn प्लस 2ln। ओके, तो इज इक्वल टू 1/3। तो देखो प्लस 2mn को माइनस 2mn प्लस 12n को अगेन दिस इज कौन गला आमर सब कटला सब कैंसिल। देख प्लस 2lm को माइनस 2lm प्लस 2mn को माइनस 2mn कैंसिल, ये प्लस 2mn को माइनस 2mn कैंसिल, माइनस 2ln को प्लस 2ln कैंसिल, माइनस 2ln को प्लस 2ln कैंसिल, प्लस 12m को माइनस 12m कैंसिल। तो रहा कहते हैं l स्क्वायर 4 टाइम्स l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, 1 2 3 1 l स्क्वायर 2 l स्क्वायर 3 l स्क्वायर 4 l स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 4/3 बिकॉज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर व्हाट ना l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सिंस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल 1 तो 4 into 1 इज इक्वल टू 4/3 तो इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट सेकेंड वन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा करिए। ओके, नेक्स्ट अगेन LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ओके, अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा मीन्स व्हाट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, नेक्स्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, नेक्स्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 4 माइनस टी कॉमन काट देले कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4 माइनस दिस इज 4/3 because cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal what 4/3. Okay, this is 4/3. So put here 4/3 is equal to 12 minus 4/3 that means 8/3 is equal to RHS. Okay, therefore sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square delta is equal to 8/3. Next question, find the acute angle. एक्यूट कहुई तो सब कौन आस कस इनवर्स मोड नब है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स व्हिच DCSR डायरेक्शन कोसाइन्स LMN आर कनेक्टेड बाय द रिलेशंस 3l plus m plus 5n is equal to 0 and 6mn minus 2ln plus 5lm is equal to 0 मीन्स दुईटा लाइन डायरेक्शन कोसाइन जाक से कौन किसी रिलेशन कनेक्शन ही अच्छी कनेक्टेड ही अच्छा तो से रिलेशन जहाँ गिभन अच्छी तो आमको ये कौन आने पड़े ना दुईटा एल आने पड़े दुईटा एन आने पड़ो भर आम एंगल बाहर करा पड़े एक्यूट एंगल बाहर करा पड़े। ओके, सॉल्यूशन गिभन रिलेशंस आर 3l plus m plus 5n is equal to 0 equation 1 and 6mn minus 2ln plus 5lm is equal to 0 equation 2. Okay, from equation 1 m is equal to
m is equal to minus 3l minus 5n, equation 3. Put the value of m in equation 2. Equation 2 रे नहीं m रो value put करो. Okay, we get 6 into what is m, minus 3l minus 5n into n. m जगह value put कर ली, minus 2ln plus 5l, what is m, minus 3l minus 5n is equal to 0. Okay, so multiply this 6 and multiply करो, minus 18ln plus minus 30n square. Okay, minus 2ln minus 15ln minus 25l minus 15l square minus 25ln is equal to 0. Or this implies minus 15l square minus 30n square minus 45ln is equal to 0. और minus 15 कॉमन काट दियो, l square plus 2n square plus 3ln is equal to 0. Okay, so this implies l square plus 2n square plus 3ln is equal to 0. Okay, तो एटा को फैक्टराइज करो, एटा को फैक्टराइज मीन्स मल्टीप्लाई कला बेलू 2, मल्टीप्लाई कला बेलू 2ln स्क्वायर, l स्क्वायर n स्क्वायर ऐड कला बेलू 3ln, तो इम्प्लाइज l स्क्वायर प्लस ln प्लस 2ln प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म l कॉमन काट दियो, l प्लस n, सेकेंड एंड थर्ड टर्म रू n कॉमन काट दियो, सॉरी दिस इज 2l स्क्वायर n स्क्वायर, दिस इज 2n स्क्वायर. ओके, तो सेकेंड टर्म में 2n कॉमन काट दियो, तो l प्लस n इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज l प्लस n इंटू l प्लस 2n इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज l प्लस n इज इक्वल टू 0 और l प्लस 2n इज इक्वल टू 0. तो l इज इक्वल टू माइनस n और l इज इक्वल टू माइनस 2n. ओके, तो व्हेन l इज इक्वल टू माइनस n then equation 3 becomes, when l is equal to minus n, equation 3 becomes, देखो आसला इक्वेशन 3 कौन अच्छी, m is equal to minus 3l minus 5n. तो इम्प्लाइज m is equal to minus 3 into l लगे तो minus n minus 5n. तो m is equal to minus 3l minus l. तो दिस इज 3n minus 5n. तो m is equal to minus 2n और दिस इम्प्लाइज m by 2 is equal to minus n. तो इज इक्वल टू l also minus n ना, तो l is equal to minus n. दैट इम्प्लाइज l by 1 is equal to m by 2 is equal to minus n टका में n by minus 1, n by कौन करिए minus 1. Therefore DRS of one line is 1, 2, minus 1. DRS of one line is 1, 2, minus 1. Again करना मात्र l is equal to minus 2n. Again l is equal to what? Again l is equal to minus 2n. Okay, then equation 3 is m is equal to minus 3 into l लगे तो minus 2n minus 5n is equal to 6n minus 5n is equal to what? n. That implies m is equal to n. Okay, m is equal to n is equal to l by minus 2, because l is equal to minus 2n, so n is equal to l by minus 2. Okay, l by minus 2. तो implies l by minus 2 is equal to m by 1 is equal to n by 1. Therefore DRS of second line is minus 2 minus 2 1 1. So this is 1 2 minus 1, this is minus 2 1 1. So ये ला a1 b1 c1, ये ला a2 b2 c2. Suppose this is a1 b1 c1 let, and this is a2 b2 c2 let. Okay, this is let.
Okay, let theta be the angle between, let theta be the acute angle between two given lines, therefore cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 mode by square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. So implies theta is equal to cos inverse mode of a1 a2. a1 is minus, a1 is 1 into minus 2 plus 1 into 2 plus 1 into minus 1 divided by square root of 1 square plus 2 square plus minus 1 whole square into square root of minus 2 square plus 1 square plus 1 square. So is equal to cos inverse, this is minus 2 plus 2 minus 1 mode divided by 1 plus 4 plus 1 root 6 into root 6. So 2 to cancel, this is a cos inverse 1 by 6 because mode is there. So minus 1 mode ta kana plus 1. Okay, hence proved. Okay, ये लगा हमारा angle between कौन कोई two lines whose direction cosines are connected by the given relations, then theta is equal to cos inverse 1 by 6. Okay. Next question, very important question. The DCS of a line in two neighboring positions are L, M, N and L plus del L, comma M plus del M, comma N plus del N. If del theta is a very small angle between them, then prove that del theta whole square is equal to del L whole square plus del M whole square plus del N whole square. Okay? अच्छा, first बुझिया try करो. Okay? Now this is a line. Okay, this is one line, this is another line, this is the del theta. Okay, so this is our direction question halla, L comma M comma N. Another one is L plus del L comma M plus del M comma N plus del N. Okay, बाबू ये इंटेट करना है बेटा, मैं जाऊँ नहीं. Okay. Okay, so del theta is very small, means approaches to 0. Okay, so given that L comma M comma N and L plus del L comma M plus del M comma N plus del N are DCS of a line in two neighboring positions. DCS of a line in two neighboring position, means पाखापाखी है neighboring position. Therefore L square plus M square plus N square is equal to 1 because they are DCS, and L plus del L whole square plus M plus del M whole square plus N plus del N whole square is equal to 1. Equation 1. This is होल स्क्वायर खोल दिया, ये ओपन कर दिया, तो L स्क्वायर प्लस del L होल स्क्वायर प्लस 2L इंटू del L प्लस M स्क्वायर प्लस del M होल स्क्वायर 2M इंटू del M प्लस N स्क्वायर प्लस del N होल स्क्वायर प्लस 2N इंटू del N इज इक्वल टू 1. तो इम्प्लाइज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस del L whole square plus del M whole square plus del N whole square plus 2 times L into del L plus M into del M plus N into del N is equal to what? 1. But this is 1. L square plus M square plus N square equal to what? 1 plus del L whole square plus del M whole square plus del N whole square plus 2 into L del L plus M del M plus N into del N is equal to 1. So 1 को 1 cancel. तो implies del L whole square plus del M whole square
plus del n whole square plus 2 into L del L plus m into del m plus n into del n is equal to 0. Equation 2. Equation what? 2. Again given that del theta is the angle between them, therefore cos del theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. Okay, L into L plus del L plus M into M plus del M, okay, plus N into N plus del N. Okay, so is equal to L square plus L del L plus M square plus M del M plus N square plus N del N. Okay, so is equal to L square plus M square plus N square plus L into del L plus M into del M plus N into del N is equal to L square plus M square plus N square is 1 plus L del L plus M del M, L del L plus M del M plus N del N. Okay, therefore L into del L plus M into del M plus N into del N is equal to cos del theta minus 1. Okay, this is equation 3. Means 1 to separate negli. Put equation 3 into, put equation 3 in 2. Put equation 3 in 2. Equation 3 negri 2 रे put करो, ए जगह रे put करो. Therefore del L whole square plus del M whole square plus del N whole square plus 2 times ए बेलटा केता आसीबो cos del theta minus 1 is equal to 0. cos del theta minus 1 is equal to 0. तो implies del L whole square plus del M whole square plus del N whole square is equal to सेपट नहीं राइट हैंड दिया 2 into 1 minus cos del theta. सेपट पड़े ये कौन हो माइनस हो तो 1 माइनस हो तो इम्प्लाइज del L होल स्क्वायर प्लस del M होल स्क्वायर प्लस del N होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 1 minus cos theta means 2 sin square theta by 2. This is the 2 sin square del theta by 2. 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2. Okay, तो implies del L होल स्क्वायर plus del M whole square plus del N whole square is equal to this is 4 na, this is 2 sin del theta by 2 whole square. Okay, since del theta is very small, since del theta is very small, therefore sin del theta tends to del theta. So this implies sin del theta by 2 tends to del theta by 2. Okay, so sin del theta by 2 tends to कौन del theta by 2. Therefore equation of 4 becomes del L whole square plus del M whole square plus del N whole square is equal to 2 into sin del theta by 2 जरा कौन पड़े del theta by 2 whole square. So 2 to cancel. So this implies del L whole square plus del M whole square plus del N whole square is equal to del theta whole square. Okay, hence proved. Okay, देखो ये find the direction cosines of a line which is perpendicular to the line whose DRS
2 2 minus 1 and 1 2 0 मीन्स गोटे लाइन डायरेक्शन क्वेश्चन बाहर करवा जो लाइनटा अन्य दुईटा लाइन को परपेंडिकुलर होची से दुईटा लाइन डायरेक्शन एक्सोस दिखाई गोटे है 2 2 minus 1 एंड वन 2 1 मीन्स 1 2 0 1 2 0 ओके। तो ठीक अच्छे लेट L, M, N be the DCS of the required line which is perpendicular to both of the given lines. Their DRSs are given lines. Their DRS are 2 2 minus 1 and 1 2 0. Okay. By condition of perpendicularity, okay, by condition of perpendicularity a1 a2 that a1 a2 means 2l a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 and a1 a2 l plus b1 b2 2m plus c1 c2 0n is equal to 0 equation 2 from equation 1 and 2 आम कौन बाहर करवा lmn बाहर करवा ओके फ्रॉम तो by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो l कॉमन m कॉमन n कॉमन तो l डिवाइडेड बाय 2 into 0 minus 1 into 2 okay 2 into 0 minus of minus 1 into 2 is equal to m divided by minus 1 into 1 minus 2 into 0 is equal to n divided by 2 into 2 minus 2 into 1 okay that is L by 0 plus 2 is equal to m by minus 1 minus 0 is equal to n by 4 minus 2 okay that is L by 2 is equal to m by minus 1 is equal to n by 2 L by 2 is equal to m by minus 1 is equal to n by 2 okay therefore DRS of the required line are 2 minus 1 2 ये ला DRS नेक्स्ट टू फाइंड कौन DCS तो आमर ABC आसीगला नेक्स्ट कौन आमर DCS बाहर करवा तो दिस इज ABC ओके तो A इज इक्वल टू 2 B इज इक्वल टू minus 1 C इज इक्वल टू तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस minus 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 plus 1 plus 4 root that is root 9 is equal to what 3 therefore DCS of the required line are L is equal to plus or minus A by root A square plus B square plus C square is equal to plus or minus 2 by 3 M is equal to plus or minus B by root A square plus B square plus C square is equal to minus 1 minus or plus 1 by root 1 by 3 and n is equal to plus or minus C by root A square plus B square plus C square so implies n is equal to 2 by 3 plus or minus 2 by 3 okay therefore L comma M comma N
is equal to plus or minus 2 by 3, comma minus or plus 1 by 3, comma plus or minus 2 by 3. This is the DCS of the required line. Okay.